असंवैधानिक करार देने का मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज फैसला सुनाएगी। 5 जजों की संविधान पीठ आज सुनाएगी फैसला। बड़ी खबर, जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता में सुनवाई। जस्टिस बी.आर. गवई, वी नागरत्ना अलग फैसला पढ़ेंगे। 7 दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा था। तो नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बड़ी खबर, नोटबंदी पर जो केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया और उस फैसले के खिलाफ फिलहाल मामला अदालत में गया, अदालत में सुनवाई हुई और अब जो बड़ी खबर आ रही है वो सरकार का फैसला जो है वो सही है। नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही, कोर्ट ने कहा। पुष्कल हमारे साथ जुड़ गए, कुमार पुष्कल, नोटबंदी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सरकार का फैसला भी सही, यानी कि सरकार ने जो किया उसके फैसले पर अब कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। लोग सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पूरे मामले में क्लीन चिट दी है और साफ तौर पे कहा कि ये फैसला सही है। आर्थिक मामलों में कोई हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं इस फैसले को सही माना है सुप्रीम कोर्ट ने। ये माना जा रहा था कि 5 बेंचों की जजों का अलग अलग वर्डिक्ट होगा, लेकिन साफ तौर से एक ही वर्डिक्ट आया है। नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही है। आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल है कि आर्थिक मामलों को पलटा नहीं जा सकता और साफ तौर पे जो सभी याचिकाएं थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो एक बड़ा फैसला आया है आर्थिक नोटबंदी के असंवैधानिक मामले को लेकर। साफ तौर पे ये कहा गया कि केंद्र सरकार ने जो फैसला किया था नोटबंदी का वो बिल्कुल सही है। जी कुमार पुष्कल, बिल्कुल जिस तरीके से नोटबंदी को लेकर के जो फैसला आया, इससे कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार को क्लीन चिट दी है। एक रात भरी खबर कही जा सकती है केंद्र सरकार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। In judgment over the merits of economic or financial policy. 2. That the scope of interference by a court is limited to instances where the impugned scheme or legislation in the economic arena has been enacted in violation of any constitutional or statutory provisions. 3. That the court may not undertake a foray into the merits, demerits, sufficiency or lack thereof, success in realizing the objectives, etc., of an economic policy, as such an analysis is the prerogative of the government in consultation with experts in the field. Being mindful of the limited scope of judicial review permissible in matters concerning economic policy decisions, I shall limit my examination of the matter to such extent as is necessary for the purpose of determining whether the process concluding in the issuance of the impugned notification was correct or as being contrary to subsection 2 of section 26 of the Act and allied aspects of the case. It may be stated at this juncture that the said aspect of the matter is not one of form, but of substance. Therefore, examining this aspect of the matter would not amount to interfering with or sitting in judgment over the merits of the policy of demonetization, and is therefore well within the limits of the Lakshman Rekha that this court has carefully drawn for itself. Then I have analyzed section 26 of the Act interpretation. There I have made again a table with a view to lend perspective to the issue with the discussion to follow. A bird's eye view of my analysis and conclusion has been expressed in a tabular form. The parameters for distinction. Then second, when the proposal for demonetization originates by way of a recommendation by the Central Board of the Bank. And the third is when the proposal for demonetization originates from the central government, as in the instant case. In that, I would say role of the central government, and the second parameter is role of the bank. The third parameter is extent of demonetization that may be proposed and carried out. Fourth, considerations for proposed measures of demonetization illustrative. 5. Process or route to be followed to carry out demonetization. And 6. Applicability of subsection 2 of section 26 of the Reserve Bank of India Act. There I have stated that when the demonetization originates by way of a recommendation by the Central Board of the Bank, it is section 26(2) which applies. But when the proposal for demonetization originates from the central government, as in the instant case,
it is not under Section 26(2) of the Act. It is to be by way of a legislation, and if legislation is not the way, in the sense there is need for secrecy, then it is ordinance. Since I have accepted the contention of the learned Attorney General appearing for Union of India in relation to the power of the central government for initiating the process of demonetization, the next question would be whether the central government can, on initiating the process of demonetization, proceed to issue a gazette notification to demonetize any or all series of any or all denomination of banknotes on the strength of subsection 2 of Section 26 of the Act. Consideration of this issue would also answer the contention of learned senior counsel for the petitioners regarding subsection 2 of Section 26 of the Act being unguided and arbitrary in nature and hence unconstitutional. To this end, the following aspects have to be examined. A. Whether demonetization can be initiated and carried out by the central government by issuing a notification in the Gazette of India as per subsection 2 of Section 26 of the Act. B. Extent of the central government's power to carry out demonetization, that is, whether all series of all denominations may be demonetized. तो फिलहाल सुनवाई जारी है। इस खबर पर हमारी